પ્રિય વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઉષ્ણકાળના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. આપણે ઠાકોરજીને આંબાનો મનોરથ કરતા હોઈએ છીએ. આજના સત્સંગમાં આપણે જે આંબા મનોરથની વાત કરવી છે ને, તેમાં તો ભક્તના ભાવથી અર્પણ કરેલી વસ્તુ ભગવાન કેવી રીતે અંગીકાર કરે છે તેનો અનેરો પ્રસંગ સમજીશું, કે જેમાં આપણને ખ્યાલ આવશે કે શ્રીનાથજીના મહાપ્રસાદનો એવો મહિમા છે કે કોઈ એક સામાન્ય રજપૂત પણ મહાન ભક્ત બની જાય છે. તો ચાલો શ્રી વલ્લભના જયઘોષ સાથે સત્સંગની શરૂઆત કરીએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પ્રિય વૈષ્ણવો, અષ્ટસખામાંના કુંભનદાસજી, જેને આપણે બધા જાણીએ છીએ, કુંભનદાસજીએ યમુનાજીના પદો પણ રચ્યા છે. કુંભનદાસજીની શ્રીનાથજીમાં અનેરી આસક્તિ છે. તો આજના સત્સંગમાં આપણે કુંભનદાસજી અને કેરીઓના પ્રસંગનું ભાવદર્શન કરીશું અને સાથે સાથે કુંભનદાસજીના દિવ્ય ચરિત્રને પણ સમજીશું. વાલા વૈષ્ણવો, એક દિવસ એક માળી ચંદ્ર સરોવર પાસે આવ્યો. તેના પાસે ખૂબ સુંદર, મોટી અને પાકેલી લગભગ 200 કેરીઓ હતી. તેણે બધી કેરીઓ ધોઈને ટોપલામાં ગોઠવવાનું શરૂ કર્યું. એ સમયે કુંભનદાસજી ત્યાં પધાર્યા. તેમણે એ સુંદર કેરીઓ જોઈ અને માળીને પૂછ્યું કે આ કેરીઓ ક્યાં લઈ જશો? માળીએ જવાબ આપ્યો કે હું આ કેરીઓ મથુરામાં વેચવા જઈ રહ્યો છું. મને એના 10 રૂપિયા મળશે. કુંભનદાસજી પાસે 10 રૂપિયા નહોતા. તેઓએ મનમાં શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી, મહારાજ, આ કેરીઓ ખૂબ સુંદર છે અને આપને લાયક છે, ઉત્તમ છે. આપ તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓને સ્વીકારનારા છો, તેથી કૃપા કરીને આ કેરીઓ સ્વીકારો, તેનો અંગીકાર કરો. ભગવાન શ્રીનાથજીએ અલૌકિક રીતે એ કેરીઓ સ્વીકારી લીધી. પણ માળીને તો આ વાતની કંઈ ખબર ના પડી. માળી મથુરા ગયો અને એ કેરીઓ એક રાજપૂતને 10 રૂપિયામાં વેચી દીધી. એ રાજપૂતે તેમાંથી 100 કેરીઓ એક બ્રાહ્મણને આપી દીધી. બંનેએ પોતાના માટે 50-50 કેરીઓ રાખી અને બાકી કેરીઓ યમુના ઘાટ પર બેઠા બેઠા ચૂસી લીધી. પછી બંને ત્યાં જ સૂઈ ગયા. રાત્રે બંને સ્વપ્નમાં શ્રીનાથજીના બંનેને દર્શન થયા. સ્વપ્ન અને પરિવર્તન. સવાર થતાં રાજપૂતે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે તમને કશું સ્વપ્ન આવ્યું છે? બ્રાહ્મણે કહ્યું, હા, મને સ્વપ્નમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન થયા. તેઓ ક્યાં રહે છે? રાજપૂતે કહ્યું કે અહીંથી થોડે દૂર ગોવર્ધન પર્વત છે, ત્યાં મંદિર છે, ત્યાં તેઓ બિરાજે છે. પછી આ રાજપૂતે કહ્યું કે તમે તો મૂર્ખ છો. આવા ભગવાનના દર્શન કર્યા પછી પણ અહીં ભટકો છો. મને તો સ્વપ્ન પછી શાંતિ નથી. તમે મને ત્યાં લઈ જાઓ. બદલામાં હું મારી બધી કેરીઓ અને 5 રૂપિયા તમને આપીશ. બંને દર્શન માટે નીકળ્યા. શ્રીનાથજીના દર્શન અને કૃપા. સાંજે તેઓ ગોવર્ધન પહોંચ્યા. તે સમયે શયન દર્શન થઈ રહ્યા હતા. શ્રીનાથજીએ રાજપૂતને એવા અલૌકિક દર્શન આપ્યા કે તે મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા. દર્શન પછી રાજપૂતે પોતાના કપડાં, હથિયાર અને 5 રૂપિયા બ્રાહ્મણને આપી દીધા. બ્રાહ્મણ મથુરા પાછો ગયો અને રાજપૂત ત્યાં જ રહી ગયો. શ્રી ગુસાઈજીની અનેરી અસીમ કૃપા. થોડીવાર પછી ત્યાં ગુસાઈજી પધાર્યા. રાજપૂતે વિનંતી કરી, મહારાજ, મને આપનો સેવક કરો. શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. તમારા પર કુંભનદાસજીની કૃપા થઈ છે. તમે બેઠકમાં આવો. બેઠકમાં રાજપૂતને કંઠી બાંધી અને અષ્ટાક્ષર મંત્રની દીક્ષા આપી. પછી પૂર્વજન્મનું રહસ્ય ખુલ્યું. રાજપૂતે પૂછ્યું કે મહારાજ, મારા પૂર્વજન્મ વિશે કંઈક કહો ને. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે તમે વ્રજમાં ગોપ હતા અને નંદરાયજીની ગાયોનું રક્ષણ કરતા હતા. એક વખત
તમે એક સાપને મારી નાખ્યો. એ પાપના કારણે તમને અનેક જન્મ લેવા પડ્યા. આજે તમે કુંભનદાસજી દ્વારા અર્પિત પ્રસાદરૂપ કેરીઓ ખાધી. તેના પ્રભાવથી તમને શ્રીનાથજીના દર્શન થયા અને તમારું મન ભગવાનમાં લાગી ગયું. જીવનના અંતિમ માર્ગનું સત્ય સમજાવતા શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે હવે તમે અહીં જ રહો. શ્રીનાથજીની ગાયોનું રક્ષણ કરો, મહાપ્રસાદ લો, કપડાં અને હથિયાર હું આપીશ. રજપૂત ત્યાં રહી ગયો અને આખું જીવન શ્રીનાથજીની ગાયોનું રક્ષણ કરતો રહ્યો. તેના 2 પુત્રો તેને શોધતા ત્યાં આવ્યા, પણ તેણે કહ્યું કે મને હવે મૃત માનજો, હવે હું ઘરે નહીં આવું. અને તેણે જીવનભર ભક્તિ અને સેવા કરી. શ્રીનાથજીના મહાપ્રસાદનો એવો મહિમા છે કે એક સામાન્ય રાજપૂત પણ મહાન ભક્ત બની ગયો. ભક્તના ભાવથી કરેલી અર્પણ વસ્તુ ભગવાન જરૂર સ્વીકાર કરે છે. એટલે જ કહેવાય છે, ભજ સખી ભાવ ભાવિક દેવ. વાલા વૈષ્ણવો, આ તો હજી આપણે ટૂંકમાં સમજ્યા. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે કુંભનદાસજીએ મનોમન શ્રીજી બાવાને વિનંતી કરી અને ઠાકોરજી પધાર્યા અને કેરી આરોગાવી. તો આ કુંભનદાસજીનું દિવ્ય ચરિત્ર કેટલું સુંદર હશે. વાલા વૈષ્ણવો, તુલસી ક્યારો પુસ્તક છે, તેમાં કુંભનદાસજીનું દિવ્ય ચરિત્ર ખૂબ વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવ્યું છે. અત્યારે તો આપણે ટૂંકમાં લઈ રહ્યા છીએ કે જેમાં કાવ્યના રૂપમાં પણ કુંભનદાસજીના ચરિત્રને સમજાવ્યું છે. પછી આપ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો કે આપને આ કુંભનદાસજીનું દિવ્ય ચરિત્ર ખૂબ વિસ્તારથી સમજવું છે, તો આપણે જરૂરથી લઈશું. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, આ કેરીનો પ્રસંગ હજી આપણે એકવાર સમજી લઈએ, ત્યારબાદ આ કુંભનદાસજીના ચરિત્રને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. એક દિવસ એક માળી એક મોટા ટોપલામાં મોટી મોટી સુંદર 200 કેરીઓ લઈને ચંદ્ર સરોવર આવ્યો. તેણે ટોપલામાંની બધી કેરીઓ જમીન પર એક કપડા પર મૂકી, જળથી સાફ કરી, પછી કપડાથી લૂછીને સુંદર રીતે ગોઠવવા માંડી. તે સમયે ત્યાં કુંભનદાસજી આવી ચડ્યા. તેમણે આ કેરીઓ જોઈ. એમને લાગ્યું કે આ કેરીઓ મારા ગોવર્ધનનાથજીને લાયક છે. તેમણે માળીને પૂછ્યું કે તું આ કેરીઓ ક્યાં લઈ જઈશ? માળીએ કહ્યું કે મથુરા, ત્યાં તેના 10 રૂપિયા મળશે. કુંભનદાસજીએ વિચાર કર્યો કે મારી પાસે તો પૈસા છે નહીં. તેમણે મનોમન શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી કે આ સામગ્રી પરમ સુંદર અને આપને લાયક છે. આપ તો ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છો, માટે આ કેરીઓ આરોગો. શ્રીનાથજીએ અલૌકિક સ્વરૂપે તે કેરીઓ અંગીકાર કરી. માળી કેરીઓ ટોપલામાં ભરી મથુરા ગયો. ત્યાં એક રજપૂતે કેરીઓ જોઈ. તેણે 10 રૂપિયા આપી બધી કેરી ખરીદી લીધી. પછી તે યમુનાજીના ઘાટ ઉપર ગયો. તે રાજપૂતની સાથે એક બ્રાહ્મણ હતો. રાજપૂતે 100 કેરીઓ બ્રાહ્મણને આપી અને 100 કેરી પોતાના માટે રાખી. બંનેએ તેમાંથી 50-50 કેરીઓ તેમના ઘર માટે અલગ રાખી. બાકીની 50 કેરીઓ ત્યાં બેઠા બેઠા ચૂસી લીધી. પછી ત્યાં સૂઈ ગયા અને બંનેને સ્વપ્નમાં શ્રીનાથજીના દર્શન થયા. તેઓ જાગ્યા અને ત્યારે રજપૂતે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે તમને કાંઈ સ્વપ્ન આવ્યું? તો બ્રાહ્મણ કહે, મને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન થયા. રજપૂતે કહ્યું કે મને એમના દર્શન થયા છે, તેઓ ક્યાં બિરાજે છે? તો બ્રાહ્મણ કહે કે અહીંથી 7 ગાંવ ઉપર શ્રી ગોવર્ધન પર્વત છે, ત્યાં મંદિરમાં બિરાજે છે. બ્રહ્મદેવ, તમે મહામૂર્ખ જણાવો છો, જેથી આવા ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા પછી પણ બીજે ભટકી રહ્યા છો. મેં તો સ્વપ્નમાં દર્શન કર્યા ને ત્યારથી મને ચેન પડતું નથી. મારા ભાગ્યની બધી કેરી તમે રાખી લો, ઉપરથી હું તમને બીજા 5 રૂપિયા આપીશ, પણ મને શ્રીનાથજીના દર્શન કરાવો. એટલે બંને જણ દર્શન કરવા ચાલ્યા. ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે શયનના દર્શન થતા હતા. દર્શન કરી બંને નીચે આવ્યા. બ્રાહ્મણ મથુરા પાછા ગયા. રજપૂત દંડવતી શિલા પાસે ઊભા રહ્યા. એટલામાં શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા. રજપૂતે કહ્યું, મહારાજ મને સેવક કરો. શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે તમારા અહોભાગ્ય છે કે તમારા પર કુંભનદાસજીની કૃપા થઈ છે. પછી આ રજપૂતને કંઠી બાંધી અષ્ટાક્ષર મંત્રની દીક્ષા આપી અને રજપૂતે તેની પાસે બચેલા 10 રૂપિયા ભેટ કરી દીધા. રજપૂતે વિનંતી કરી કે મહારાજ મારા પૂર્વજન્મ વિશે કંઈક કહો. તો ગુસાઈજી કહે છે કે ભાઈ, તમે તો
વ્રજમાં ગોપ હતા, શ્રી નંદરાયજીની ગાયોની ચોકી કરતા. એક દિવસ તમે એક સાપને માર્યો, તેના અપરાધથી પૃથ્વી પર ઘણા જન્મો લીધા. આજે કુંભનદાસજીને માળી પાસેની કેરીઓ મનોમન શ્રીનાથજીને અંગીકાર કરાવી અને તમે તે પ્રસાદીઓ કેરી ખરીદી. તે લેવાથી તમારું મન ફરી ગયું અને શ્રીનાથજીએ તમને સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યા. હવે તમે શ્રીનાથજીની ગાયોનું રક્ષણ કરો અને અહીં મહાપ્રસાદ લેજો. એ રજપૂતને 2 દીકરા હતા. તેઓ પિતાને શોધતા શોધતા આવ્યા. રજપૂત વૈષ્ણવે કહ્યું કે આપણે તો ક્ષત્રિય છીએ, યુદ્ધમાં પ્રાણ ચાલ્યા જાય તો તેની નવાઈ હોતી નથી. તમે એમ માનજો કે તમારા પિતા મૃત્યુ પામ્યો છે. તમે ઘેર પાછા જાઓ, મારી રાહ જોશો નહીં. હવે હું ઘેર નહીં આવું. તે રજપૂત જીવનભર શ્રીનાથજીની ગાયોની સેવા કરતા રહ્યા. વાલા વૈષ્ણવો, જરા વિચાર કરો. કુંભનદાસજીએ મનોમન શ્રીજી બાવાને કેરી ધરાવી અને એ મહાપ્રસાદના રૂપમાં આ રજપૂતે લીધી અને એમના જીવનનું આવું સુંદર પરિવર્તન થયું. તો આ કુંભનદાસજી જે અષ્ટસખામાંના એક છે, એમનું દિવ્ય ચરિત્ર કેટલું સુંદર હશે. ચાલો તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અષ્ટસખા રસ દર્શન. અષ્ટસખા રસ દર્શન આપણે અષ્ટછાપ કવિમાંના કુંભનદાસજી વિશે આજે જાણીશું. 3 જન્મોની લીલા ભાવના છે તે આપણે કુંભનદાસજી વિશે જાણીશું. શ્રી કુંભનદાસજી શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક છે. શ્રીનાથજીમાં તેમની આસક્તિ છે અને કુલ્હેના શ્રૃંગારમાં તેમનું સ્થાન છે. રાજભોગ સમયના દર્શનની તેઓ કીર્તન સેવા કરે છે. કુંભનદાસજી જન્મ સંવત 1535 ચૈત્રવદ 11, ગોલોકવાસ સંવત 1640. ભૂતલ પર તેમનું પ્રાગટ્ય જમનાવતા ગામમાં એક ગોરા ક્ષત્રિયને ત્યાં થયું હતું. એમને શ્રી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ હતી. સખા ભાવથી શ્રી ઠાકોરજી એમને કુંભના સંબોધન કરતા હતા. નિત્ય લીલામાં અર્જુન સખા સ્વરૂપે અને વિશાખા સખી સ્વરૂપે છે. રાજભોગ સમયના કીર્તનનું કાર્ય સોંપાયું હતું, છતાંય તે સિવાયના સમયના પણ કીર્તન તથા વધાઈઓ રચી છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે આવ્યા હતા. રસાત્મક મધુર લીલા, કિશોર લીલાના પદ ઘણા રચ્યા છે. જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે કુંભનદાસને નિષ્કંચતાના કારણે પરદેશ સાથે લઈ જવાની આજ્ઞા કરી, ત્યારે થોડી ક્ષણો માટેનો પ્રભુનો વિયોગ સહી ન શકવાથી પાછા વળવાની આજ્ઞા કરી. સમ્રાટ અકબરના દરબારમાં તેડું આવ્યું. ત્યાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સુરદાસજીની માફક ખુમારી સહિત કહી દીધું કે તમારું મોઢું જોવાથી દુઃખ થયું અને પ્રભુથી વિમુખ થવાયું. અકબરે કંઈક માંગવાનું કહ્યું તો જવાબ આપ્યો કે હવે પછીથી ફરીથી કદીએ બોલાવવો નહીં. કુંભનદાસજીને 7 પુત્રો હતા. એકવાર શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે પૂછ્યું કે કુંભનદાસ, તમારે પુત્રો કેટલા? તો તેમણે જવાબ આપ્યો 1.5 પુત્ર. સાંભળી શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે અમે તો સાંભળ્યું છે કે તમારે 7 પુત્રો છે અને તમે કહો છો કે 1.5 પુત્ર, તે કેવી રીતે? ત્યારે કુંભનદાસજીએ જવાબ આપ્યો કે જે ભગવત સેવા સ્મરણ કરે તે આખો પુત્ર ચતુર્ભુતદાસજી અને જે 2 માંથી 1 કરે તે અડધો પુત્ર કૃષ્ણદાસ અને કશું પણ ન કરે તે પુત્ર નહીં. આન્યોર પાસે શ્રી ગિરિરાજજીનું એક દ્વાર છે, ત્યાંના એ મુખિયા છે. આ બીજું ચિત્ર જે છે, કુંભનદાસજી શ્રી કૃષ્ણ અવતારમાં અર્જુન સખા છે. નિકુંજ લીલાનો તેમને અનુભવ છે અને હૃદય સ્થાનમાંથી તેમનું પ્રાગટ્ય છે. આ ચિત્રજી નિકુંજ લીલાનું ચિત્રજી છે અને ઠાકોરજીના હૃદયમાંથી કુંભનદાસજીનું પ્રાગટ્ય છે. અને આ ત્રીજું ચિત્રજી છે તે નિકુંજ લીલામાં કુંભનદાસજી જે વિશાખા સખી સ્વરૂપ છે તેનું ચિત્રજી છે અને આન્યોરમાં સદુ પાંડેના દ્વાર પાસે તેમનું નિવાસ છે. નિકુંજ લીલામાં તેઓ વિશાખા સખી સ્વરૂપે છે, યુગલ સ્વરૂપની સેવા કરે છે. હવે આપણે કુંભનદાસજીનું વાર્તાનું ધોળ જોઈશું. કુંભનદાસજીની વાર્તાનું ધોળ.
ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ રે, નિત્ય ઉઠી શ્રી યમુનાજી નાઈએ રે, ત્યાં જઈ દર્શનના સુખ લઈએ રે. ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ રે. ચોથા દર્શન રાજભોગના જય નિરખો શ્રીનાથ, કુંભમદાસ કીર્તન કરે ઉભા નિકુંજ વ્રજનાથ. સારસ્વત કલ્પમાં અર્જુન જાણો રે, નિત્ય લીલામાં વિશાખા પ્રમાણો રે, આસક્તિ શ્રીનાથજીમાં જાણો રે. ચાલો સખી શ્રીજી જઈએ રે. શ્રૃંગાર ધર્ય કુલ્હે તણો, નિકુંજ લીલાને દ્વાર. પ્રાકટ્ય પ્રભુ હૃદય સ્થાનથી, દર્શન દીન દયાળ. ઠોર આન્યોરમાં સદુ પાંડે રે, સદા શ્રીજી સ્વરૂપે બિરાજે રે. ચોથું દ્વાર ગિરિરાજનું ગાજે રે. આ કુંભદાસજીની લીલાનું ધોળ હતું કે તેમાં લીલામાં તે કઈ સખી છે ને ક્યાં સખા છે તેનું આ ધોળ હતું. હવે આવે છે કુંભદાસજીની વાર્તાનું ધોળ. કુંભદાસજી ગોરવા ક્ષત્રિ જમનાવતા છે ગામ રે, સખા અર્જુન સખી વિશાખા આનંદનું છે ધામ રે. સખી એક વિશાખાજીની સરોવર એનું નામ રે, સંગ્રહે છે કુંભદાસની ભત્રીજી રસનું ઠામ રે. અષ્ટ છાપમાં મુખ્ય કહાવે કંઠ મધુર અતિ ભારી રે, વાત સોણી શ્રી વલ્લભ પ્રભુએ પ્રગટ કર્યા ગિરિધારી રે. સ્ત્રી સહિત એ શરણે આવ્યા કીર્તન સેવા દીધી રે, શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા માની જન્મ ભર તે કીધી રે. સાંજ કે સાચે બોલતી હારે એ પદ પહેલું ગાયું રે, યુગલ સ્વરૂપની લીલામાં હે મન તેનું અરુઝાવ્યું રે. થયો ઉપદ્રવ મ્લેચ્છો તણો ત્યારે ભેંસા પર પધરાવી રે, ટોટ ઘનો પધરાવ્યા પ્રભુને સામગ્રી શિરાની આરોગાવી રે. ભાવત હે તો ટોડકો ઘનો એ પદ ગાયું ત્યારે રે, પ્રસન્ન થયા પ્રભુ પદ સોણીને શ્રી ગોવર્ધન પ્યારે રે. સોણી પ્રશંસા દેશાધિપતિએ મળવા બોલ્યા ખાસ રે, હુકમ માની ગયા ડેરા પર મનમાં અતિ ઉદાસ રે. કહા સિકરી કો કામ ભક્તન કો પદ ગાયું કહ્યું રે, કહ્યું જ્યારે રે, કહ્યું માગો મુજ પાસેથી ફરી ન બોલાવજે ક્યારે રે. માનસી મળવા આવ્યો છે ધન દેવાની આશ રે, કુંભદાસે કઈ ન લીધું હરિ પર અતિ વિશ્વાસ રે. હોડ પરી સામગ્રી સુંદર કોના ઘરથી આવે રે, સામગ્રી તું સરસ બનાવી તારા ઘરથી લાવે રે. ભોઠા પાડું સકળ સખાને તે કહેવા હું આવ્યો રે, આપ કહો તે બનાવી લાવું રુચિકર વ્યંજન તે વારે. જવારની મહેરી રોટી બેચરની ટેટી શાક સંધાણું રે, દૂધ દહીં બસ આ સામગ્રી લાવતો સરસ વખાણું રે. બની સામગ્રી અતિશય સુંદર સ્વામીની જી સરાહી રે, બડો મેવા એક ટેટી વ્રજ મેં પદ આગાયું ત્યાહી રે. સંત મહંત વૃંદાવન કેરા તેણે પરીક્ષા લીધી રે, કર્યું વર્ણન રાધા સ્વરૂપનું આપી ઉપમા બહુવિધિ રે. કહ્યું ત્યારે પૂછ્યું શ્રી વિઠ્ઠલ દોઢ બેટા છે મારે રે, સેવા કથા કરે તે આખો અડધો ગાયો ચરાવે રે. કૃષ્ણદાસને સિંહે માર્યા મૂર્છિત થયા સુણી વાત રે, દર્શન કરાવીશ કહ્યું શ્રી વિઠ્ઠલ બેઠા થયા હરખા તારે. ગોવર્ધન ધરને છોડી કદીએ ગયા ન ગોકુળ ગામ રે, પ્રયત્ન કર્યો શ્રી ગોકુલનાથજી ગયો શ્રમ ન કામ રે. માનસીમાં આમ ધર્યા તે આરોગ્યા શ્રીનાથ રે, રજપૂતે તે આમ ખરીદ્યા ચૂસ્યા યમના ઘાટ રે. આપ્યા દર્શન સ્વપ્મહી છે શ્રી ગોવર્ધન ધારી રે, વિઠ્ઠલ પ્રભુનું શરણ ગ્રહી કરી ગાયોની રખવારી રે. વિઠ્ઠલનાથનો જન્મ દિવસ મનાવ્યો કુંજ બિહારી રે, 5 રૂપિયા પાડા વેચીને આપ્યા ભાવ વિચારી રે. દેહ અશક્ત થઈ છે જ્યારે શંકર શણકુટ પર સોયે રે,
विठ्ठल प्रभुए पूछ्યું ત્યાં જઈ કહો મન જ્યાં હોય રે, રસિકની રસ में હરહત ગળી, એ પદ ગાયું છે છેલ્લે રે, દેહ ત્યજી લીલામાં પધાર્યા જ્યાં રસિક ધુરંધર ખેલે રે, ભક્તજનોના ગુણ ગાવાથી પ્રસન્ન થાય ગિરધારી રે, लाल प्रभु लीलामा तेने आपे वास सुखकार गायत है। 3 की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये कुंभनदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अर्जुन सखा अंतरंग 3 को प्राकट्य है। 100 दिवस की लीला में तो अर्जुन सखा है और रात्रि की लीला में विशाखा सखी है। सो श्री स्वामिनी जी की 103 को यानी विशाखा जी को दूसरो स्वरूप कृष्णदास मेघन सदा पृथ्वी परिक्रमा में श्री आचार्य जी के संग रहते और कुंभनदास जी सदा श्री गोवर्धन नाथ जी के संग रहते। सो या भाव थे कुंभनदास जी सखा भाव में अर्जुन सखा रूप और सखी भाव में विशाखा सखी रूप है। सो श्री गिरिराज जी में 8 द्वार है, ता में 1 द्वार आनी और पास है। सो तहाँ की सेवा के ये मुखिया है और गांव को नाम जमनावता। या सो कहत है जो श्री यमुना जी के प्रवाह सरस्वत कल्प में 2 हते, एक तो जमनावता होय के आगरे के पास जात हतो और एक चीरघाट होय श्री गोकुल होय के आगे 2 धारा 1 मिली सरस्वत कल्प में बहती और ता समय आगरा आदि गाम नहीं हतो। 2 धारा 1 मिली के आगे को गई हती। सो चीरघाट ते धारा होय के गिरिराज आवती। तासो पंचाध्यायी को रास परासोली में चंद्र सरोवर ऊपर किए। सो व्रज भक्त अंतर ध्यान के समय चंद्र सरोवर सो द्रुमलतान सो पूछत चली। सो गोविंद कुंड के पास होय के अप्सरा कुंड ऊपर आई के श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन भय। तासो अप्सरा कुंड ऊपर चरण चिन्ह है। तहाँ ते आगे चली के राधा सहचरी के बेनी गुही। सो सिंदूर काजर सगरो सिंगार कियो। तासो वहां सिंदूरी कजली और बाजरी शिला है। ता पाछे जब रुद्रकुंड ऊपर आई के राधा सहचरी को मान भयो। सो श्री ठाकुर जी सो कहियो जो मोसो तो चलियो नहीं जात है। तब श्री ठाकुर जी कांधे चढ़न की कही के ताके मिश वृक्ष तरे ही अंतर ध्यान भय। तब राधा सहचरी रुदन कियो जो हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधि। तासो वाकुंड को नाम रुद्रकुंड है। सो बताई लोग वासो रुद्रकुंड कहते। पाछे तहाँ सब गोपी आई मिली। पाछे आगे चली के जान अजान वृक्ष सो पूछते पूछते जमनावता श्री जमुना जी की पुलिन में गोपी का गीत जयती ते दिकम गाय के सब भक्तन ने रुदन कियो। तब श्री ठाकुर जी आपू प्रकट होय के फेरी परासोली चंद्र सरोवर में रास किए। सो श्रम भयो। तब श्री यमुना जी के जल में जल विहार किए। सो या प्रकार सारस्वत कल्प की पंचाध्यायी को रास श्री गिरिराज जी के पास है और व्रज भक्त ढूंढत ढूंढत श्री ठाकुर जी के मिलनार्थ दूरी गई। सो अंधियारो देखी के उहाते फिर तमः प्रविष्ट मालक्ष्य ततो निवृत्तु हरे है इति। सो यह अंधियारो श्याम ढाक के आगे समाई गाम है। सो तहाँ श्याम वन है। सो महासघन ताते वहां पंचाध्यायी के अनुसार सगरे स्थल दर्शन देत है और कालीदह घाट होते हु श्री वृंदावन कहत है। तहाँ हूँ बंसी वट है। तहाँ अनेक श्वेतवाराह कल्प में पंचाध्यायी को रास उहाँ ही किए है और सारस्वत कल्प में शरद ऋतु किए तो फरासोली श्री गिरिराज जी ऊपर किए। पाछे वसंत चैत्र वैशाख को रास केशी घाट पास बंसी भट्ट नीचे किए। सो या प्रकार रास 2 ठिकाने परंतु मुख्य पंचाध्यायी सारस्वत कल्प को रास श्री गिरिराज जी को। या प्रकार लीला के भेद हैं। तासो जमनावता में एक धारा श्री यमुना जी की सारस्वत कल्प में बहती। तासोवा गांव को नाम जमनावता है। सो नंदगाम बरसाने के मध्य संकेत पास धारा हुई के श्री यमुनावता आई। तासो संकेत के पास श्री यमुना जी के पधारवी को चिन्ह है। सो या प्रकार याते कहियो जो अब के जीव को विश्वास दृढ़ होत नहीं है। गोवर्धननाथ जी हमारो सर्वस्व है। तासो इनकी सेवा में तुम तत्पर रहियो और श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन किए बिना महाप्रसाद मती लीजियो और श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा सावधानी से करियो।
सो श्री कुंभनदास कीर्तन बहुत सुंदर गावते, कंठ इनको बहुत सुंदर हतो। तासो कुंभनदास सो श्री आचार्य जी आपू कहे, जो तुम समय समय के कीर्तन नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी को सुनाइयो। सो प्रातः काल श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी को जगाए के कुंभनदास को कहे, जो कछु भगवत लीला वर्णन करो। तब कुंभनदास श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडवत करी के पहले यह पद गायो। सांझ के साचे बोल तिहारे, सांझ के साचे बोल तिहारे, रजनी अनंत जगे नंद नंदन आए निपट सवारे। आतुर भये नीलपट ओढ़े, पियरे बसन बिसारे। कुंभनदास प्रभु गोवर्धन धर, भले वचन प्रतिपारे। सांझ के साचे बोल तिहारे। सो यह कीर्तन कुंभनदास के मुख से सुनी के श्री आचार्य जी आपू कहे, जो कुंभनदास निकुंज लीला संबंधी रस को अनुभव भयो। तब कुंभनदास ने दंडवत कीनी और कहियो, जो महाराज आपू की कृपा ते। तब श्री आचार्य जी आपू कहे, तो तिहारे बड़े भाग्य है, जो प्रथम प्रभु तुमको प्रमेय बल को अनुभव बताए, तासो तुम सदा हरिरस में मगन रहोगे। तब कुंभनदास ने विनती कीनी, जो महाराज मोको तो सर्वोपरि याही रस को अनुभव कृपा करके दीजिए। सो कुंभनदास सगरे कीर्तन युगल स्वरूप संबंधी किए। सो बधाई पलना बाल लीला गाई नहीं। सो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भये। या प्रकार कुंभनदास जी आदि वैष्णव ऊपर कृपा करे। श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड में पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी के पधारे हते। सो फेरी जीवन की ऊपर कृपा करण के परिक्रमा करण के अर्थ परिक्रमा करण पधारे। कुंभनदासनी वार्तामां बीजा प्रसंगमां आवे छे के ठाकोरजी श्रीजी बाबा पाડા ઉપર બેસીને ટોડના ઘનામાં પધારે છે, તેનો આપણે ભાવ પ્રકાશ જોઈશું અને તે પછી તેમાં જે પદ આવે છે તે જોઈશું। सो वह भैंसा दैवी जीव हतो। सो वह लीला में श्री वृषभान जी के घर की मालिन है। सो नित्य फूलन की माला श्री वृषभान जी के घर करी के ले आवती। सो लीला में वृंदा या को नाम है। एक दिन श्री स्वामिनी जी की बगीची में पधारी। ता समय वृंदा के पास एक बेटी हती। सो ताको खवावती हती। सो याने उठी के न तो दंडवत कीनी और न समाधान कियो। तब श्री स्वामिनी जी ने यासो कछु कहियो नहीं। ता पाछे श्री स्वामिनी जी ने वृंदासो कही, जो तो श्री नंदराय जी के घर जाए के श्री ठाकुर जी सो समस्या सो हमारो यहाँ पधारियो कहियो। तब श्री स्वामिनी जी के वचन सुनी के वृंदा ने कही, जो अब ही मेरे माला करी के श्री विश्वान जी को पठावनी है, तासो मैं तो जात नहीं। यह वचन सुनी के श्री स्वामिनी जी ने यासो कही, जो मैं यहाँ आई तब तेने उठी के सम्मान हूँ न कियो और एक कार्य कहियो, सो तो सो नहीं बनियो। तासो तू या बगीचे में रहिवे योग्य नहीं है और तू यहाँ सो गिरी के भैंसा को जन्म ले हो। सो यह शाप श्री स्वामिनी जी ने या मालिनी को दियो। तब यह मालिन श्री स्वामी जी के चरणारविंद में जाए पड़े और बहुत ही विनती स्तुति करन लगी और कही, जो अब ऐसी कृपा करो जो फेरी में यहाँ आओ। तब श्री स्वामिनी जी ने यासो कही, जो जब तेरे ऊपर चढ़ी के श्री ठाकुर जीवन में पधारेंगे तब तेरो अंगीकार होएगो। सो भैंसा को यापू चढ़ी के टोंड के घने में पधारे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी को एक और तो रामदास जी पकड़े चले और एक और ते सदु पांडे पकड़े चले और कुंभनदास और माणिकचंद पांडे बीच में थांभे जाए। सो मार्ग में कांटा बहुत लागे, वस्त्र सब फाटी गए, बहुत दुख पायो। मार्ग आछो न हतो। सो आ टोंड के घना में बीच में एक निकुंज हती। અહીં આમાં ભક્તોને કાંટા વાગે છે તે પદમાં પણ આવશે, પરંતુ આ પાડાને કાંટા લાગતા નથી, કારણ કે પાડો છે તે લીલામાં માલિન છે ને માલિન હોય તે ફૂલ વીણે કાંટા ન બીને એ ભાવ છે, એટલે જે નામ હોય તેવા ગુણ પ્રગટ કરે છે। આવું કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં સાંભળ્યું હતું। तो वह टोंड के घना में बीच में एक निकुंज है, तहाँ नदी है। सो कुंभनदास और माणिकचंद पांडे दो जने श्रीनाथ जी के आगे मार्ग बतावे। लता कांटा टारत जाए। सो यह प्रकार टोंड के घने में भीतर एक चौतरा है।
तहाँ छोटो सो सरोवर है और एक गोल चौक मंडलाकार है। तहाँ रामदास जी और कुंभनदास जी श्रीनाथ जी से पूछे, जो आपो कहाँ बिराजोगे? तब श्रीनाथ जी आपू आज्ञा किए, जो यही चौतरा पे बिराजेंगे। सो तब श्रीनाथ जी के नीचे भैंसा के ऊपर गादी डारे हते। सो वही गादी चौतरा ऊपर डारी बिछाई। तापे श्रीनाथ जी को पधराई। पाछे श्रीनाथ जी रामदास जी सो आज्ञा किए, जो तुम कछु भोग धरी के न्यारे ठाडे दो। तब रामदास जी तथा कुंभनदास जी मन में विचारे, जो कोई व्रज भक्तन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए यहाँ लीला करे है। पाछे रामदास जी थोड़ी सामग्री भोग धरे। सो तब श्री गोवर्धननाथ जी कहे, जो सब सामग्री धरी देव। सो रामदास जी उतावली में 2 सेर चून को सीरा कर लाए हते। सो सगरो भोग धरे। पाछे रामदास जी श्री गोवर्धननाथ जी ते कहे, जो सगरी सामग्री भोग धरी पर यहाँ रहनो होय तब कहा करेंगे? तब श्री गोवर्धननाथ जी कहे, जो यहाँ रहनो नहीं है, जो इतना ही काम हतो। पाछे कुंभनदास सहित सदो पांडे, माणिकचंद पांडे और रामदास जी ये चारों जन एक वृक्ष की ओट में जाए बैठे। सो तब निकुंज के भीतर श्री स्वामिनी जी अपने हाथ से मनोरथ की सामग्री करी हती। सो लेके श्री गोवर्धननाथ जी के पास पधारी। पाछे मिली के भोजन करनो विचार कियो। सो सामग्री करत रंचक श्री स्वामिनी जी को श्रम भयो। तासो श्री गोवर्धननाथ जी आपू श्री मुक्ते कुंभनदास को आज्ञा किए, जो कुंभनदास तू कछु या समय कीर्तन गावे तो मन प्रसन्न होय और मैं सामग्री आरोगो थो। तासो तू कीर्तन गाओ। सो कुंभनदास अपने मन में विचारे, जो प्रभु को मन का जो हास्य प्रसंग सुनिवे को है। और कुंभनदास आदि चारियो वैष्णव भूखे हते और काटाहू लगे हते। सो ता समय कुंभनदास ने एक पद गायो। અહીં એક ખુલાસો કરવાનો છે કે કુંભનદાસ ને ઠાકોરજી કુંભના કહેતા। કુંભ છે એ મંગલનું ચિહ્ન છે અને આ કુંભ છે તે રસરૂપ ઠાકોરજીના રસાનુભવથી ભરેલું છે, એટલે ઠાકોરજીનો તેને ખૂબ જ સાનુભાવ છે યુગલ સ્વરૂપનો, એટલે ઠાકોરજી તેને કુંભના કહેતા। એટલે કુંભનદાસની છાપ છે એનો અર્થ એવો પણ થાય કે આ રસરૂપ ભરેલા આ રસરૂપ ઠાકોરજીના દાસ છે તે કુંભનદાસ છે। રાગ સારંગ ભાવત હૈ તો ही टोंड को घनो कांटा लागे गोखरु वागे फट्यो जात है तनो सिंहे कहा लोकरी को डर यह कहा बानिक बन्यो कुंभनदास तुम गोवर्धन धर वह कौन राण ढेंढनी को जन्यो। तो यह कीर्तन सुनी के श्री गोवर्धननाथ जी और श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न भय और सब वैष्णव प्रसन्न भय। ता पाछे माला के समय कुंभनदास ने यह पद गायो। सो पद बोलत श्याम मनोहर बैठे कमल खंड और कदम की छैया कुसुमित द्रुम अलिपीक गूंजत कोकिला कर गावत तहिया सुनत दुतिका के वचन माधुरी भयो हुलास तन मन महिया कुंभनदास प्रभु व्रज जुवती मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधर पहिया। यह पद कुंभनदास ने गायो। फरी एक बार बोलत श्याम मनोहर बैठे कमल खंड और कदम की छैया कुसुमित द्रुम अलिपिक गुंजत कोकिला कल गावत तहिया सुनत दुतिका के वचन माधुरी भयो हुलास तन मन महिया कुंभनदास प्रभु व्रज युवती मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधर पहिया। यह पद कुंभनदास ने गायो। सो सुनी के श्री गोवर्धननाथ जी आप बहुत प्रसन्न भय। तब श्री स्वामिनी जी ने श्री गोवर्धनदास से पूछी, जो तुम कौन प्रकार पधारे? तब श्री गोवर्धननाथ जी ने कही, जो सदु पांडे के घर भैंसा हतो सो वा ऊपर चढ़ी के पधारे है। तब श्री गोवर्धननाथ जी के वचन सुनी के श्री स्वामिनी जी आपू आ भैंसा की ओर देखी के कृपा करी के कहे, जो यह तो मेरे बाग की मालिन है, सो मेरी अवज्ञा ते भैंसा भई, परंतु आज याने भली सेवा करी तासो अबिया को अपराध निवृत्त भयो। सो या प्रकार कही नाना प्रकार की केली टोंड के घने में करी के श्री स्वामिनी जी तो बरसाने में पधारे। भाव प्रकाश सो तहाँ कांटा बहुत होते, सो श्री स्वामिनी जी वहाँ कैसे पधारे यह शंका होय तहाँ कहत है, जो ये व्रज के वृक्ष परम स्वरूपात्मक है। सो जहाँ जैसी इच्छा होय सो तहाँ तैसी कुंजलता फल फूल हो जात है। सो कबहु सकल कांटा तो यह लौकिक लोगन को दिसत है।
सो तहाँ कुंज में सब रज भक्त सहित श्री ठाकुर जी आप लीला करत है। सो तहाँ गोपन को और मर्यादा वारिन को यह काटन की आड़ होत है, नातर सघन मन होत है। सो व्रज के भक्त सदा सेवा में तत्पर रहत है, सो तासो संदेह नहीं है। और श्री गोवर्धन नाथ जी भैंसा ऊपर चढ़ी के टोड के गना में पधारे। सो ता समय 4 वैष्णव संग हते। सो मार्ग में ब्रजवासी लोग बहुत मिलते। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को देखे नहीं, जाने जो भैंसा लिए चारी जन जात है। सो काटा न होए तो सगरे ब्रजवासी तहाँ आए। यह प्रकार केवल ब्रज भक्तन को सुख देना अर्थ श्री ठाकुर जी की लीला रस है। सो लौकिक में डरी के छिपी के पधारनो, सो यह रस है। ईश्वरता को भाव नहीं विचारनो है। ईश्वरता में कहे तो भजनो कहा, डर जहाँ माधुर्य रस में है सो प्रेम सो। ईश्वरता में डर नहीं है। या प्रकार रसिक आए। सो इतने में श्री गोवर्धन सो समाचार आए, जो वह म्लेच्छ की फौज आई हती सो पाछी गई है। तब सदु पांडे ने आई के श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहियो, जो वह फौज तो म्लेच्छ की भाजी गई। तब गोवर्धन धर कहे, जो अब तुमको गिरिराज ऊपर मंदिर में पधराओ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को भैंसा ऊपर बैठाए। पांचे चारियों वैष्णव ने श्रीनाथ जी को श्री गिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर में पधराए। तब भैंसा पर्वत सो उतरी के देह छोड़ी के फेरी लीला में प्राप्त भयो। पांचे सगरे ब्रजवासी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के बहुत हर्षित भय और कहन लागे, जो धन्य है देव दमन, जो इनके प्रताप सो ऐसो उपद्रव भयो होतो सो एक क्षण में मिटी गयो। सो कछु जानियो हो न पर्यो। तब कुंभनदास ने श्रीनाथ जी के आगे यह पद गायो, जयति जयति हरिदास वर्य धरने, वारी वृष्टि निवारी, घोख आरती टारी, देवपति मान भंग करने। जयति पटपित दामिनी, रुचिर वर मृदुल अंग सावल जलद वरने। कर अधर बेनु धरी, गान कल रव शब्द सहज व्रज युवती, जन चित्त हरने। जयति वृंदा विपिन भूमि, डोलनी अखिल लोक, बंदनी अंबु रुह चरने। तरनी तनया तीर विहार, नंद गोप कुमार, दास कुंभन नमित तुद शरणे। આ પદમાં અહીં દાસ કુંભન એવી છાપ છે, એટલે કુંભન એટલે કે રસરૂપ શ્રી ઠાકોરજી, તેના દાસ કુંભનદાસજી, એવો પણ એક ભાવ છે। કૃષ્ણ તરની તનયા તીર રાસ મંડલ રચ્યો, અધર કર મધુર સુર બેનું બાજે। જુવતી જન જૂથ સંગ નિર્તત, અનેક રંગ નિરખી, અભિમાન તજી કામ લાજે। શ્યામ તન પીત કૌશેય, शुभ पद नख चंद्रिका, सकल भुव तिमिर भाजे। ललित अवतंस भ्रुव भू, धनुष लोचन चपल, चितवनी मनो मदन बान साजे। मुखर मंजीर कटी किंकनी, कुनित रव वचन गंभीर, मनु मेघ गाजे। दास कुंभन नाथ हरिदास वर्य धरन, नख सिख स्वरूप अद्भुत बिराजे। આ પદમાં પણ દાસ કુંભન એવી છાપ છે, એટલે કે કુંભન એટલે કે રસરૂપ શ્રી ઠાકોરજીના દાસ કુંભનદાસજી છે। सो ऐसे कीर्तन कुंभनदास ने श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत सुनाए। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभनदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भय। सो कुंभनदास के पद जगत में प्रसिद्ध भय। सो प्रसंग त्रीजो, सो कुंभनदास ने बहुत पद बनाए। सो जहाँ जहाँ लोग गावन लागे, ता पाछी एक कलावत ने एक पद कुंभनदास जी को सीख्यो। सो देशाधिपति के आगे गायो। सो सीकरी फतेहपुर में देशाधिपति के डेरा हते, सो तहाँ यह पद गायो। सो पद देखरी आवनी मदन गोपाल की, आ आवनी नु पद छे। ठाकोरजी गोचारण करीने पधारे छे नंदालयमां, અત્યારનું પદ છે આવનીનું। દેખરી આવની મદન ગોપાલ की, सक्र वाहन गति निरख, लाजत गजगति अनुप लटक चाल की। श्याम तन कटी बसन मन हरन, सुंदरता उर्षिमाल की। प्रोह धनुष सजी मनहु मदन सर, चितवनी लोचन विशाल की। रेणु मंडित कुंतल, अलक शोभा केसर को तिलक भाल की। दास कुंभन चारु रास मोहे,
જગતો ગોવર્ધનધર કુંવર રસાલકી. અહીં પણ દાસ કુંભન એવી છાપ છે, એટલે રસરૂપ ઠાકોરજીના દાસ એ कुंभन दास जी છે. सो यह कीर्तन सुनी के देशाधिपति को मन वह पद में गड़ी गयो. सो माथो धुनियो और कहियो जो ऐसे ऐसे महापुरुष भूमि पर हो गए, सो जिनको ऐसे दर्शन परमेश्वर के होते. तब वह कलावत ने देशाधिपति सो कही, जो साहिब वे महापुरुष पद करवे वाले यहाँ वही है. तो तब यह देशाधिपति व कलावत के ऊपर बहुत प्रसन्न हो के पूछियो, जो वे महापुरुष कहाँ हैं? तब कहा कलावत ने कही, जो श्री गोवर्धन के पास जमनावतो गांव है, सो तहाँ वे महापुरुष रहत है और कुंभन दास जी उनको नाम है. तब देशाधिपति ने कही, जो उनका यहाँ ही बुलाओ, जो हम उनसे मिलेंगे. पाछे देशाधिपति ने अपने मनुष्य और सब तरह की असवारी कुंभन दास को लेवे को पठाई. सिकरी को काम आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम. जाको मुख देखे दुखे, उपजे ताको करनो पर्यो प्रणाम. कुंभन दास लाल गिरिधर बीनो यह सब झूठो धाम. એટલે ઠાકોરજી વિના બધું જ નકામું છે. આમાં કહે છે કે ભક્તને આ સિકરીનું શું કામ છે? આવા જવામાં મારી પનૈયા તૂટી અને એટલો સમય મારું હરિનામ છૂટ્યું, અને જેનું મુખ જોઈને દુઃખ ઉપજે એને મારે પ્રણામ કરવા પડી રહ્યા છે. કુંભનદાસ કહે છે કે લાલ गिरधर વિના આ બધું झूठું જ છે. सो यह पद कुंभन दास ने गायो. सो सुनी के देशाधिपति अपने मन में बहुत कूटियो. सो पाछे उन्होंने अपने मन में विचारी, जो इनको कछु लेवो को लालच होय तो ये मेरी खुशामद करे, जो इनको तो अपने ईश्वर सो काम है. यह विचारी के अकबर पातशाह ने कुंभन दास सो कहियो, जो बाबा साहिब मोको कछु आज्ञा फरमावो सो मैं करूं. तब कुंभन दास ने कही, जो आज पाछे मोको कबहू बुलाइयो मती. तब देशाधिपति ने कुंभन दास को विदा किए. सो तब कुंभन दास वहां चले. सो मार्ग में आवत कुंभन दास के मन में श्री गोवर्धन नाथ जी को विरह कलेश भयो. जो अब मैं गोवर्धन नाथ जी को मुख कब देखो. सो ऐसे विचार करत मार्ग में आवत कुंभन दास ने विरह को पद गायो. सो पद कबहो देखी हो इन नैननु, सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति अंग अंग सुख देननु. वृंदावन विहार दिन दिन प्रति गोप, वृंद संग लेलनु. हसी हसी हरखी पतौवनी, पीवनु बाटी बाटी पय फेननु. कुंभन दास कहते दिन बीते, किए रेन सुख सैननु. अब गिरिधर बीनु निसी अरु बासर, मन न परत कछु चैनहु. सो ऐसे पद मार्ग में गावत कुंभन दास श्री गिरिराज ऊपर आए. श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए. सो दोय प्रहर बीते. सो कुंभन दास को मानो दोय जुग बीते. ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रीमुख देखती सगळो दुख बिसरी गयो. ता समय कुंभन दास ने एक पद गायो. सोबत नैन भरी देख्यो नंद कुमार, नैन भरी देख्यो नंद कुमार. ता दिन ते सब भूली गई हो, बिसरियो पति परिवार. बिनु देखे ही बिबस भैरी, अंग अंग सब हारी. ताते सुधी है सावरी मूर्ति, लोचन भरी भरी वारी. रूप राशि परिमित नहीं मानो, कैसे मिले कन्हाई. कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, मिली बहुरी उरलाई. પછી હિલગનું પદ છે, હિલગન કઠિન હે યામન કી. હિલગ એટલે વિખૂટા પડીને પાછા મળીએ તેને હિલગના પદ કહે છે. એટલે હિલગ એટલે હૈયે લગાડવું એવો મતલબ થાય છે. હિલગન કઠિન હે યામન की, जाके लिए देखी मेरी सजनी, लाज गई सब तन की. धर्म जाओ और लोग हंसो सब, और आवो कुलगारी. सो क्यों रहता ही बिनु देखे, जो जाको हितकारी. रस लोभ एक निमिष नहीं, छांडत ज्यो अधीन मृग गाने. कुंभन दास यह स्नेह मरम को, श्री गोवर्धन धर जाने. सो ऐसे पद कुंभन दास ने बहुत ही गाए. सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आपू कहे, जो कुंभन दास तू धन्य है, जो मेरे बिना एक चिंतो को कल नहीं है. तासो मोहू को
તો બીના કછું સુહાત નહીં, એટલે મને તારા વગર ગમતું નથી. સો આ પ્રકાર કુંભનદાસજી और श्री गोवर्धननाथजी की परस्पर प्रीति હતી. પ્રસંગ 4. હવે માનસિંહ દેવરાજાનો પ્રસંગ આવે છે. આપણે આખો પ્રસંગ નહીં લઈએ, પરંતુ એટલે માનસિંહ રાજા એક વખત ગિરિરાજજીમાં દર્શન કરવા ગયા ત્યારનો પ્રસંગ છે. તેને કે માનસિંહ આજે કેટલી જગ્યાએ દર્શન કર્યા, પણ રાજા પધારવાના છે એટલે બધાએ ઠાકોરજીને એકદમ ભારે શ્રૃંગાર ધરાવ્યા અને એકદમ રત્ન જડિત. એટલે માનસિંહ રાજાને પણ એમ થયું કે હા, આવી ગરમીમાં આવા શ્રૃંગાર ઠાકોરજીને કેટલો શ્રમ પડતો હશે. પછી ત્યાર પછી गिरिराज ઉપર પધારે છે. सो तीसरे प्रहर श्री गोवर्धन में आयो, तब काहू ने कही जो श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन को चलोगे. तब राजा मानसिंह ने कहियो जो श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन तो अवश्य करने हैं. सो तब गोपालपुर में आए के दर्शन को समय पूछ्यो. तब काहू ने कही जो उत्थापन के दर्शन हो चुके हैं और भोग के दर्शन की तैयारी है. तब यह सुनी के राजा मानसिंह पर्वत के ऊपर चढ़ियो. सो महा गर्मी पड़े. सो उघारे पांव राजा गर्मी में व्याकुल होई ऊपर गयो. सो तब ही भोग के किवाड़ खुले हते. सो श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करत ही राजा मानसिंह के नेत्र सिरे होई गए. सो उन दिनन में श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा बड़े वैभव से होत ही. सो उष्ण काल के दिन हते, ताते गुलाब के जल सो छिड़काव भयो हतो और अरगजा की लपट आवत है और सुगंध आवत है और दोहरो पंखा होत है. सुपेद पाग परधनी को सिंगार, श्रीकंठ में मोतीन की माला और मोतीन के करण फूल और मोतीन के सूक्ष्म आभूषण, सो सुगंध सहित सीरी ब्यारी लागी. सो राजा मानसिंह को रोम रोम शीतल भयो. सेवा रीति देखी के राजा मानसिंह ने कहियो जो सेवा तो यहाँ है. जो श्री ठाकुर जी सुख सो बिराजे हैं. सो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट भय सुने हते श्री भागवत में. सो श्री गोवर्धननाथ जी यही है. तासो आजो मेरे बड़े भाग्य है जो मैंने ऐसो दर्शन पायो है. ता समय श्री गोवर्धननाथ जी के आगे कुंभनदास जी पद गावत होते. सो जैसे गोवर्धनधर कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप मनहरम, ऐसे और तैसे रस रूप कुंभनदास जी ने पद गा. नैना पलक लागे नहीं गोवर्धनधर के अंग अंग प्रति निरखी नैन मन रहत तही. कहारी कहो कछु कहत न आवे, चित चोरियो वे मांग दही. कुंभनदास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सखियन सोजू कही. बीजू पद पुतरी पोरिया इनके भयरी माई, कोरो के या मग आवत खंजन छोरी. दए पलक न कपाट दिएरी माई, ठाडे रहत प्रेम के बाढ़े, निस्बासर सब सुख चितएरी माई. कुंभनदास लाल गिरिधरन मन के भाजन फोरी ढंढोरी लिएरी माई. त्रीजो पद आवत गिरिधर मन जो हरियो हूँ अपने घर सचू सो बैठी निरखी वदन अचरा बिसरियो हो. रूप निधान रसिक नंद नंदन निरखी नैन धीरज न धरियो हूँ. कुंभनदास प्रभु गोवर्धनधर अंग अंग प्रेम पीयूष भरियो हूँ. सो ऐसे पद कुंभनदास जी ने गाए. ता पाछे भोग को समय हो चुक्यो. तब टेरा आयो. पाछे राजा मानसिंह दंडवत करी के अपने डेरान में आयो. ता पाछे सेनारती के समय कुंभनदास जी ने यह पद गायो. सो पद लाल के बदन पर आरती वारो, चारु चितवनी करो साजनी की. युक्ति बाती अगणित ध्रुत कपूर सोबारो, शंख धुनी भेरी मृदंग झालर झांझ ताल घंटा बाजे बहुत विस्तारो. गाऊं सामल सुजस रसना सुख स्वाद रस परम हरखतन चमर करडारो. कोटि उद्योत रवि कांति अंग अंग छवि सकल भूलोक को तिमिर टारो. दास कुंभन पिय लाल गिरिधरन को
रूप देखी नयनन भरी भरी निहारो। सो या प्रकार सने के कीर्तन गाय अपनी सेवा सो पहुंची के कुमनदास जी अपने घर जमनावता में आए। सो वहाँ राजा मानसिंह अपने डेरान में जाए के अपने मनुष्य के आगे श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा श्रृंगार की वार्ता कहन लाग्यो और कहियो जो श्री गोवर्धननाथ जी के आगे विष्णु पद गावत थे सो कौन हतो जो ऐसे पद गाए जो मन में बैठी गए हैं। ऐसे पद आज ताई मैंने कबहू सुने नहीं। तब एक ब्रजवासी ने कहियो जो ये गोरवा है और कुमनदास जी इनको नाम है, जो अपनी खेती में अन्न होए सो ताही सो निर्वाह करत है, जो तुमने सुने ही होंगे, जो आगे देशाधिपति ने बुलाए हते परंतु कुमनदास जी कछु लिए नहीं, जो ये महापुरुष हैं। सो तब राजा मानसिंह ने कहियो जो आज तो रात्रि भई है या ते काल सवारे हम इनसो मिलेंगे। सो तब प्रातः काल राजा मानसिंह उठी के श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करत परासोली में आई। એટલે હવે આ પ્રસંગ આવે છે કે શ્રીજી બાવા કુમુદાસજીની ગોદીમાં બિરાજતા હોય છે અને રાજા માનસિંહ ત્યાં પધારે છે ત્યારે ઠાકોરજી ઝાડ પાછળ છુપાઈ જાય છે। ये खेत ऊपर बैठे होते सो इतने ही में श्री गोवर्धननाथ जी आपू कुमनदास के पास पधारे। सो श्री मुख देखत ही कुमनदास जी श्रीनाथ जी सो कहे जो बाबा आगे आओ। तब श्रीनाथ जी आपू कुमनदास जी की गोद में बैठी के कहे जो कुमनदास मैं तो सो एक बात कहन आयो हूँ। सो या प्रकार कहत हते इतने में राजा मानसिंह कुमनदास जी के पास आयो। सोता ही समय श्री गोवर्धननाथ जी आपू भाजी के डरी के एक वृक्ष की ओट में जाए के ठाडे भय। सोता ही समय कुमनदास जी की दृष्टि तो एक श्री गोवर्धननाथ जी के संग गई। सो जहाँ श्री गोवर्धननाथ जी ठाडे हते सोता ही और को देखियो करे। तब राजा मानसिंह कुमनदास को प्रणाम करी के पास बैठियो परंतु कुमनदास जी तो राजा मानसिंह की ओर दृष्टि हो नहीं किए। सो कुमनदास जी की एक भतीजी हती सो जमनावते सो बेजरी को चून कठौती में करी लेके कुमनदास को रसोई करवे के लिए लावत हती। सो या भतीजी सो एक ब्रजवासी ने कहियो जो तू भेगी जा जो कुमनदास जी पास राजा गयो है सो वह कछु देवे तो तू लीजियो क्यों जो कुमनदास जी तो छुएंगे हो नहीं। तब यह भतीजी बेगी ही कुमनदास जी के पास आई। तब कुमनदास जी की दृष्टि एक वृक्ष के ओर देखी के कहे जो बाबा राजा बैठियो है सो कछु इनको समाधान करो। तब कुमनदास जी कहे जो मैं कहा करूँ जो बैठियो है तो जो कछु बात कहत हते सो भाजी गई सो अब बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तब श्री गोवर्धननाथ जी आपू सेन ही में कुमनदास जी सो कहे जो मैं तिहारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो मैं बात कहूँगो तो चिंता मती करे। तब कुमनदास जी को चित ठिकाने आयो। सो कुमनदास जी और श्री गोवर्धननाथ जी की वार्ता राजा आदि कहू ने जानी नहीं। पाछे कुमनदास जी ने भतीजी सो कहियो जो बेटी आसन और आरसी लावे तो मैं तिलक करी लेऊं। तो भतीजी ने कहियो जो बाबा आसन यानी घास को आसन और पड़िया भैंस की पाड़ी। आसन पड़िया खाई के आरसी कथौटी को जल पी गई। तब कुमनदास जी ने कहियो जो आरसी करी ले आओ तो आछो। यह बात सुनी के राजा मानसिंह ने अपने मन में कहियो जो आसन खाई के आरसी पड़िया पी गई सो कहा। सो इतने में ही भतीजी एक पूरा घास को और एक कथौटी में पानी भरी के ले आई। सो पूरा को आसन बिछाई दियो। सोता पूरा पर कुमनदास जी बैठी के कथौटी में पानी में मुख देखी के तिलक करन लागे। तब राजा मानसिंह ने अपने मन में जान्यो जो कुमनदास जी के द्रव्य को बहुत संकोच है जो आसन आरसी तिलक करवे की नाही है। सो कुमनदास जी त्यागी सुनत हते सो देखे। तब राजा मानसिंह ने आरसी सोने की जड़ाव घर में जड़ी ऐसी मनुष्य सो मंगाई और पाछे वह आरसी कुमनदास जी के आगे धरी के कहियो जो बाबा साहेब या में मुख देखी के तिलक करिए। तब कुमनदास जी कहे जो अरे भैया मैं या को घर धरूंगो कहाँ, हमारे तो यह छानी के घर है। सो यह आरसी हमारे घर में होए तो या के पीछे कोई हमारो जीव ले तासो हमारे नहीं चाहिए थे। तब राजा मानसिंह ने मन में विचारी जो ये आरसी लेके कहा करेंगे, जो कहा या को बेचन जाएंगे यह तो इनके काम की नहीं है। तासो कछु ऐसो द्रव्य देऊं जो जन्म आदि भरवे
करी के खायो करे। तब 1000 मोहर की थैली कुमनदास जी के आगे धरी। तब कुमनदास जी ने कही, जो यह हमारे के काम की नहीं है, हमारे तो खेती होते है, तो जो धान उपजत है सो हम खाते हैं, और कछु हमको चाहिए नहीं। तब राजा मानसी ने कहियो, जो तिहारो गाम जमनावता है, सो ताको मैं तुमको लिख्यो करी देऊं। तब कुमनदास जी ने राजा मानसी से कहियो, जो मैं ब्राह्मण तो नहीं, जो तेरो उदक लेऊं, और तो जो तेरे देनो होए तो और को ब्राह्मण को दीजियो, मोको तिहारो कछु नहीं चाहिए थे। तब राजा मानसी ने कहियो, जो तुम मोको अपनो मोदी बताओ, सो ताके पास सो सीधो सामान लियो करो। तब कुमनदास जी ने कही, जो जैसे हम हैं सो तैसे ही हमारो मोदी है। तब राजा मानसी ने कहियो, जो बताओ तो सही, जो मैं वाको देऊंगो। तब कुमनदास जी ने एक करील को वृक्ष दिखायो और एक बेर को वृक्ष दिखाई के कहियो, जो उष्णकाल में तो मोदी करील है, सो फूल और टेटी देत है, और शीतकाल को मोदी बेर को झाड़ है, सो बेर बहुत देत है, सो ऐसे काम चलियो जात है। तब राजा मानसी ने कही, जो धन्य है जिनके वृक्ष मोदी है, जो मैंने आज ताई बड़े बड़े त्यागी वैरागी देखे, परंतु ये गृहस्थ सो ऐसे त्यागी है, सो ऐसे धरती पर नहीं है। सो तब राजा मानसी कुमनदास जी को प्रणाम करी के कहियो, जो बाबा साहेब હું सो कछु तो आज्ञा करो। तब कुमनदास जी कहे, जो हम कहेंगे सो करोगे। तब राजा मानसी ने कही, जो तुम आज्ञा करो सोई मैं अपनो परम भाग्य मानी के करूंगा। तब कुमनदास जी ने कही, जो आज पछे तुम हमारे पास कबहू मती आई हो, और हम सो कछु कहियो मती। तब राजा मानसी ने दंडवत करके कही, जो तुम धन्य हो, माया के भक्त तो मैं सगरी पृथ्वी में फिरियो, सो बहुत देखे, परंतु श्री ठाकुर जी के साचे भक्त तो एक तुम ही देखे। सो यह कही के राजा मानसी चलियो गयो। तब भतीजी ने पास आई के कुमनदास जी से कही, जो घर में तो कछु हतो नहीं, सो राजा देते तो क्यों न लियो। तब कुमनदास जी कहे, जो बैठी राण श्री गोवर्धन जी सुनेंगे तो खींचेंगे। जो कुमनदास की भतीजी बड़ी लोभीन है। तब भतीजी ने कहियो, जो मैंने तो हंसी के कहियो हतो, जो मोको तो कछु नहीं चाहिए थे। तब कुमनदास जी कहियो, जो बेटी कहू सो लेवे की वार्ता हाँसी में हूँ कबहू न कहिए। सो तब श्री गोवर्धन जी आए के कुमनदास जी की गोद में बैठी के कहे, बोलो जीव तो लो देखो, बार बार पाई लागो, चित अनत न धरो, तब सुख चिंतत तो ही लो, ले ले अंग भरो, रसिकन मांज रसिक, नंद नंदन तुम पिय मेरे, सकल दुख हरो, आवहु सदा रहो घर मेरे, श्याम मनोहर संग किन करो, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, तुम बिन अंजन कासो करो। सो यह कीर्तन कुमनदास जी को सुन के श्री गोवर्धन जी करे सो लपटी के कहे, गलबैया दीदी एम, जो कुमनदास मैं तो सो एक बात कहन को आयो हूँ। तब कुमनदास जी ने कही, जो कहिए आप आ समय बात कहत होते, सो ता समय वो तो राजा अभाग्य आई गयो, सो आप भाजी गए। सो तब सो मेरो मन वा बात में लागी रहियो है, सो यह बात आप कृपा करी के कहिए। तब श्री गोवर्धन जी आप कुमनदास को कहे, जो कुमनदास आज सखान में होड़ परी है, जो भोजन सबके घर न्यारो न्यारो देखिए, तामे सुंदर कौन के घर को है, सो तुम कछु मनोरथ करोगे। सो मैं यह बात तो सो कहिवे आयो हूँ। तब कुमनदास जी पूछे, जो आपकी रुचि काहे पे है। तब श्री गोवर्धन जी कहे, जो ज्वार की महेरी, दही दूध, बेजरी की रोटी और टेटी को साग संधानो। तब कुमनदास जी कहे, जो यह तो घर में सिद्ध है। तब श्री गोवर्धन जी कहे, जो बेगी मंगाओ। सो तब कुमनदास जी भतीजी सो कहे, जा जो घर ते बेजरी को चून, टेटी को साग संधानो, दही दूध बेगी ले आओ। तब भतीजी ने कही, जो बेजरी को चून, टेटी को साग संधानो, दही इतनो तो मैं ले आई हूँ, और दूध जमाई वे के ताई तातो होता है। तब कुमनदास जी कहे, जो दूध जमावे मती, दूध की हांडी और ज्वार गरते दरी के ले आओ। सो तहा ताई में रसोई करत हो। सो नाई के तो कुमनदास जी बैठे ही हते, तासो बेजरी की रोटी नौंडारी के ठिकरा पे किए। इतने में भतीजी जमनावता गांव में जाए के ज्वारी दरी के दूध की हांडी ले आई। तब कुमनदास जी हांडी में पानी डाली के ज्वार की सामग्री सिद्ध किए। इतने में करते सखान की छाक आई। सो कुमनदास की सामग्री श्री गोवर्धन जी पास राखे, पाचे घर के सखान को चखाई आपू आरोगे।
भाव प्रकाश कुंभनदास जी की सामग्री विशाखा जी ने दूध में मिश्री डाली श्री स्वामिनी जी को आरोग्य अति मधुर कर दीने। सो का है ते तो विशाखा जी को प्रागट्य कुंभनदास जी है। और जब श्री ठाकुर जी को कुंभनदास जी की सामग्री बहुत स्वाद लगी ता समय कुंभनदास जी ने कीर्तन गाए। सो पद ब्रज में बड़ो मेवा यह टेटी जाको होत है साग संधान और बेजर की रोटी ले ले डलिया बिनन निकसी बड़े गोप की बेटी कुंभन दास लाल गिरिधर सो वे गई भेटा भेटी। बीजू पद घर घर ते आई है छाक खाटे मीठे और सलोने विविध भांति के पाक मंडल रचना करी जमुना तट सघन लता की छाही गोपी ग्वाल सकल मिली जे मत मुख ही सराहत जाही बाटत बल मोहन दो भैया कर दो ना अति सोहे चाखत आपुन सखन मुखन दे के गोपी जन मन मोहे टेटी साग संधानो रोटी गोरस सरस महेरी कुंभन दास गिरिधर रस लंपट नाचत दे दे फेरी। सो यह कुंभनदास जी अति आनंद पाए के गाय और अपने मन में कहे जो श्री गोवर्धन नाथ जी ने भले एक बात कही जो या में या लीला को अनुभव भयो। या प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभनदास जी के ऊपर कृपा करते वह दिन कुंभनदास जी रस में मग्न हो गए। सो सांझ को शरीर की सुधि आई तब परासोली तो दौड़े जो आज में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन नहीं पायो विरह मन में उठी आयो। सो भोग सरत हतो ता समय कुंभनदास जी मंदिर में आए मन में यह जो कब दर्शन पाऊं इतने में सेन के किवाड़ खुले तब कुंभनदास जी श्री गोवर्धन जी के दर्शन करी नेत्र चकटक लगाए के यह कीर्तन गाए। लोचन मिली गए जब चारयो हो वे रही ठगी सी ठाडी उर अचरा न सवारियो अपने सुभाई नंद झुके आई सुंदर श्याम निहारियो चकटक लगी चरण गति था कि क्यों हूँ टरत नहीं टारियो उपजी प्रीति मदन मोहन सो गृह को काज बिसरियो कुंभनदास गिरिधर रस लोभी भलो आरज पंथ पारियो। बीजू पद नंद नंदन की बलि जइए सावल मृदुल कलेवर की छवि देखी देखी सुख पइए सकल लोकपति ठाकुर रसना रसिक विमल जश गइए कुंभनदास प्रभु गिरिधर को तन मन सर्वस्व दइए। त्रिजु पद छीनु छीनु बानिक और ही और जब देखो तब नौतन सकिरी दृष्टि न रहे एक ठोर कहाँ कहाँ परमीत नाही पावत बहुत करो चित दौर कुंभनदास प्रभु सो भग शिवा गिरिधर